Define the surface tension beta. Surface tension represented with letter capital T. Surface tension is nothing but equal to force acting per your unit length. Unit is Newton per meter. T is equals to your F by your L. T is equals to F by your L. Unit is Newton per meter. Okay. इसके अंदर थोड़े conditions लिख लेते हैं बेटा. Surface tension on a wire, isn't it? Surface tension force on a wire of length L, of length how much? L, which is placed on water. मैंने क्लास में भी लिखवाया था, याद है किसी को? हाँ, so T is equals to your 2T into your L. अगर force होना है तो F is equals to your 2T into your L. For circular disc, force required to pull it, F is equals to your 2 pi R into your capital T. Okay, the same way, if I'm talking about the surface tension force on a ring, of radius capital R. On a ring, it has two surfaces beta. So F will be equal to your 2 into your 2 pi into capital R into surface tension T. Surface tension means nothing but a thin layer of approximately 10 to 15 molecular diameter beta. 10 to the power of minus 15 molecular diameter. So very small spaces between them. ठीक है? और इसके अंदर एक important formula भी होता है और एक बेटा जो आप लोग याद रखना है. Number 2, surface energy. Surface energy. That means the energy which has been required to pull the body, isn't it? So work done in this one is given by the formula. मैं यहाँ पर formula लिख देता हूँ, देखो ज़्यादा detail में जाने की ज़रूरत नहीं है. So work done is equals to your surface tension into your increase in surface area. ठीक है? इसके अंदर थोड़ा application है वो आप लोग को याद रखना है. Work done in breaking a liquid drop. Work done in breaking a liquid drop. So work done is equals to surface tension T into how many droplets? N droplets. N into your, this one will be equal to your 4 pi into your small r square minus 4 pi into your capital R square. तो इसमें से मैं 4 pi को कॉमन ले लूं, 4 pi into capital T into this is n into small r square minus of your capital R square. So work done in breaking a drop, a liquid drop into your n number of your droplets. Relation between capital R and small r क्या होता है बेटा, याद है किसी को? Capital R is equals to your n to the power of 1 by 3 into your small r. याद है ना? Capital R is equals to n to the power of 1 by 3 into your small r. क्लियर है? चलो और एक फॉर्मूला. वर्क डन इन ब्लोइंग द सोप बबल. सोप बबल हैज टू सरफेसेस. वर्क डन इन ब्लोइंग a soap bubble from 0 to radius r. From 0 to radius of capital R. So work done has two surface areas. So it is T is equals to T into this one is 2 times of 4 pi into your R square. And this will become for me 8 pi T into your R square. So work done will be equal to your 8 pi T into your capital R square. So work done is equals to your this much. Done? For soap bubble के लिए important है बेटा. Soap bubble has always two surfaces. Relation between capital R and small r is equals to this much. And work done in breaking a liquid drop is W is equals to 4 pi into capital T and R square into capital R. Work done in breaking a liquid drop. So work done is equals to surface tension into your change in delta area. Bubble बोलो या film बोलो, one in the same. ठीक है?
चलो नेक्स्ट वन, प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस देखो बेटा, अगर मैं लिक्विड ड्रॉप के बारे में बात करूं, इन ए लिक्विड ड्रॉप, in a liquid drop, initial pressure minus outward pressure is equals to your 2t divided by कैपिलर, या डेल्टा पी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। उसी तरह से in a soap bubble, in a soap bubble has two surfaces बेटा, p inside minus of your p outside is equals to 4t divided by capital R, ठीक है। तो in general for one free surface p inside minus p out, जो एक्स्ट्रा रहेगा वो ज्यादा ले लीजिए, so that will be equal to your t into 1 by r1 plus 1 by r2, जनरल फॉर्मूला फॉर योर वन फ्री सरफेस। अगर दोनों सेम है तो दोनों रेडियस सेम ले लेना, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। सो बबल के लिए कितना है 40 बाई आर, लिक्विड ड्रॉप के लिए 2t बाई आर, ठीक है। नेक्स्ट वन, कैपिलरी राइस। कैपिलरी राइस याद होगा, the liquid which is entering into the small bore when it is been immersed in any water is given by the formula H is equals to your 2t into your cos theta divided by your r rho into your g. H is equals to your 2t cos theta divided by your r rho into g. R is the radius of the capillary tube beta. R is equals to your radius of capillary tube, radius of your capillary tube, ओके। और कैपिलर स्मॉल आर का रिलेशन क्या होता है बेटा, कहते हैं किसी को, कैपिलर इज इक्वल्स टू योर स्मॉल आर डिवाइडेड बाय cos theta. Small r is your radius of capillary tube, capillary is nothing but radius of the curvature on which it is been formed. तो h का फॉर्मूला कितना बन गया बेटा, h is equals to, so cos theta by your r can be written as what beta, 2t divided by capital R rho into g. H is equals to your 2t r rho into your g, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो कैपिलर स्मॉल आर का एक बार रिलेशन रफली मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो ये हो गया ये वाला कर्वेचर, इसका जो रेडियस है ना यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया रेडियस कैपिलर, और ये कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक के जो रेडियस है ना, ये हो गया मेरे पास स्मॉल आर, ठीक है ना। ये वाला हो गया स्मॉल आर एंड दिस वन इज योर कैपिलर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन, force required to pull the plates, apart having some liquid between them. याद है किसी को फॉर्मूला, क्लास में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था इसके बारे में, डायग्राम वगैरह निकाल के। फोर्स विल बी इक्वल टू योर P naught minus of your P inside into your area is equals to, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 2t into your ये
divided by your small d. Small d is the distance between the two plates. F is equals to 2t into a divided by d. D is the separation between the plates, beta. D is your separation between plates. Okay? And A is the area of each plate. A is your area of each plate. Okay? Sure. Next one. थोड़े शॉर्टकट्स बेटा जो डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड बनते हैं बेसिकली. फर्स्ट वन, when two soap bubbles of radii R1 and R2 are in contact. Okay, तो उसका रेडियस क्या बनेगा बेटा? The radius of curvature of contact point, curvature of your contact point, ऐसा कुछ. दो soap bubbles जब मिल रहे हैं बेसिकली, इसका कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बनेगा जब करेंगे, तो इसका हो गया रेडियस R1 और इसका हो गया रेडियस R2 और इसका कॉमन रेडियस हो गया R. फॉर्मूला याद है आप लोग को? स्मॉल r इज इक्वल्स टू योर R2 माइनस ऑफ योर R1 डिवाइडेड बाय योर R1 इनटू योर R2. डन बेटा? चलो और एक, when soap bubbles, when soap bubble of radii R1 comma R2 comma R3 comma R4 comma so on up to Rn, चाहे कितने भी हो, are coalesced, coalesced, coalesced isothermally यानी temperature remains constant isothermally to form a single bubble, to form a single bubble. So its radius become how much beta? याद है किसी को फॉर्मूला है? Its radius will become for me R square is equals to R1 square plus R2 square plus R3 square plus so on up to your Rn square. ठीक है? For two radii, for two soap bubble, I can write R square is equals to R1 square plus R2 square. यानी R will become for me under root of your R1 square plus R2 square. Done? Next one. Very important one, beta. The difference of the height of liquid in YouTube. The difference of heights in a liquid in YouTube. In YouTube. ऐसा कुछ YouTube होगा बेसिकली. दोनों का हाइट डिफरेंस यहां से यहां तक h. ठीक है, क्या होगा बेटा? क्या है किसी को? डेल्टा h will be equal to your 2t divided by rho into g into your 1 by R1 minus 1 by R2. This will be the formula. Done? This one is delta h मान लीजिए. इसका रेडियस R1 होगा और इसका रेडियस R2. ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा, सरफेस टेंशन वर्सेस योर टेम्परेचर.
capital T versus small t. Capital T is your surface tension beta. Okay, and this is a temperature at your 0 degree centigrade. इसका जो ग्राफ बनेगा that will be your straight line like this. यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका सरफेस टेंशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जाएगा. क्लियर है? So these are some of the common formulas which you need to remember better for doing the numericals. Done? Sure. Question देखो बेटा. Good question. Two soap bubbles of radii R1 and R2. R1 and R2 are kept in vacuum. Are kept in vacuum at constant temperature. The ratio of masses of air inside them is, give the options, R1 by R2. Second option is R1 cube divided by R2 cube. Third one is R1 square divided by R2 square. And fourth one is R2 cube divided by your R1 cube. So try करो. Two soap bubbles of radii कितना है बेटा? Capital R1 and capital R2. Both of them are kept in the vacuum at constant temperature. The ratio of their masses of air inside them will be equal to your how much? Constant temperature मतलब क्या बेटा? Isothermal. So if I'm using the ideal gas equation, PV is equals to N into R into T. In terms of masses, if I'm writing, N will be equal to your mass divided by molecular mass into R into T. तो अगर मैं इसमें से PV का रिलेशन ले रहा हूँ बेसिकली, capital M constant, R constant, capital T constant. So small m is equals to your P into V. So m is directly proportional. तो ये हो गया M1 divided by M2 is equals to P1 V1 divided by P2 V2. ठीक है ना? सो बबल्स के लिए प्रेशर कैसे लिखोगे बेटा? 4T divided by your R1 into volume will be equal to 4 by 3 pi into your R1 cube divided by 4T divided by R2 into 4 by 3 pi into your R2 cube. 4 by 3 gets cancelled. 40 will get cancelled. R1 square में से चले गया तो स्क्वायर बनेगा, यहाँ से R1 चले गया तो ये भी स्क्वायर बनेगा. That means this one is your R1 square divided by R2 square. Third option. Done बेटा? Very good. Next one. The work done in blowing a soap bubble of volume V is W. The work done in blowing a soap bubble of volume 2V. Volume 2V is dash. First option is W. Second option is 2W. Third option is 2 to the power of 2 by 3 times of W. And fourth option is 3 to the power of 2 by 3 times of W. Okay, बताओ जल्दी से.
वर्क डन का फॉर्मूला, सो बबल के लिए क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन इज इक्वल्स टू योर 8 पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल टी। तो दोनों के लिए लिखना है, तो W1 डिवाइडेड बाई योर W2 इज इक्वल्स टू 8 पाई इंटू योर R1 स्क्वायर इंटू कैपिटल T डिवाइडेड बाई 8 पाई इंटू योर R2 स्क्वायर इंटू कैपिटल T। 8 by 8 capital T will get cancelled. That is equals to R1 square divided by R2 square. तो वॉल्यूम के लिए पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है बेटा, V is equals to 4/3 pi into your R cube। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ V1 divided by V2 is equals to R1 divided by R2 whole cube। ठीक है ना, तो R1 by R2 कैसे लिख सकता हूँ बेटा, V1 by V2 is equals to your R1 square R1 by R2, R1 by R2 whole square है, isn't it? So this can be written as of your R1 square by R2 square will be equal to your how much? So you can write here R1 divided by R2 whole square is equals to V1 divided by V2 to the power of your 2/3। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा V1 is V, this one is 2V to the power of 2/3, A V और V चले गया, this one is your R1 divided by R2 का whole square। तो कितना आ जाएगा बेटा, W1 by W2। So the work done in bubble will be equal to how much for me? So W1 by W2 will be equal to your W1 divided by W2 is equals to 1/2 to the power of your 2/3। So W2 will be equal to your how much? W2 will be equal to your, this will be equal to how much, इधर चले जाएगा, this one will be equal to W1 2 to the power of 2/3। So this will be the answer। Two to the power of 2/3, this will be the answer। Done बेटा, विस्कोसिटी एक बचा है बेटा, आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स लिक्विड्स गैसेस एंड कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री की वैसे भी तो रिकॉर्डिंग भी है, आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कैलोरीमेट्री वगैरह के बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स सरफेस टेंशन वगैरह के निकालने के लिए। हाँ सरफेस टेंशन भी है बेटा कल के टेस्ट के लिए, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स नहीं है बेटा। विस्कोसिटी के तो मेन फॉर्मूलेस याद है ना बेटा सभी को? हाँ हीट ट्रांसफर भी है बेटा। विस्कस फोर्स के फॉर्मूले बताओ जल्दी से एक बार। पहले वाला विस्कस फोर्स, given by the formula F is equals to your neta A V divided by your distance between them D। Neta is your viscosity, V is your velocity better। Okay, दूसरा वाला स्टोक्स फॉर्मूला, स्टोक्स फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्फेरिकल बॉडीज बोला था मैंने।
for spherical bodies, F viscous is equals to 6 pi neta R into your V. Viscous force is equals to 6 pi neta R into your V. V is your velocity बेटा, ठीक है। और एक फॉर्मूला जो फेमस है इसके अंदर, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है किसी को? V is equals to 2 by 9 1 by neta rho minus of sigma into your r square into your g, ठीक है ना। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पॉइजलेस इक्वेशन। Poiseuille's equation, isn't it? So what is the formula for the Poiseuille's equation बेटा, याद है? इसके अंदर एक फॉर्मूला आपको याद रखना है रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस ऑफ द फोर R is equals to 8 neta into L divided by pi R to the power of 4। और रेट लिखने का तरीका है बेटा, R is equals to your delta P divided by your flow Q, ओके। और इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं बेसिकली 8 neta into your L divided by pi R to the power of 4, यानी रेट का फॉर्मूला हो गया Q। Q is equals to delta P pi R to the power of your 4 divided by 8 neta into your L, ओके। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रेनॉल्ड्स नंबर, Reynolds number. Reynolds number is represented by letter RE. So Reynolds number is equals to inertial force divided by viscous force. Inertial force divided by viscous force. इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है बेटा, याद है किसी को? RE is equals to rho V into capital D divided by your mu. Okay. RE is your Reynolds number, rho is your what? Density, mu is your viscosity बेटा। और नीटा के हिसाब से लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Divided by neta. So rho is your density, V is your velocity of flow, capital T is diameter of the pipe, neta is your viscosity, R is your Reynolds number। इतने फॉर्मूलेस तो भी एटलीस्ट मिनिमम आप लोग को याद रखना है फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स। इसको ऐसा लिख लीजिए ना, तो मोर बेटर। विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू नीटा इंटू योर ये, नीटा इंटू ये इंटू dv डिवाइडेड बाय dy और dx, एनीथिंग, ठीक है। स्टोक्स फॉर्मूला 6 पाई नीटा r इंटू योर v। रेसिस्टेंस ऑफ द पाइप का फॉर्मूला क्या है बेटा, R इज इक्वल्स टू योर 8 नीटा L डिवाइडेड बाय pi r टू द पावर ऑफ 4। सीरीज पैरेलल का तो आपको याद है, सीरीज के लिए R1 plus R2, पैरेलल के लिए when the pipes are connected in parallel 1 by R1 plus 1 by R2 पार्ट, वो लिख लीजिए, that will be more than enough, ठीक है। कल I hope you have college tomorrow, I don't know, because tomorrow is Ambedkar Jayanti, I don't know home। कल एग्जाम है
क्लासेस है नहीं है, ये पहले कंफर्म कर लो, हो गए शायद मेरे ख्याल से। अगर क्लासेस रहेंगे तो एग्जाम के तो पेपर्स आ चुके होंगे। आई जस्ट नीड टू चेक इट इन द कैंपस वंस। आप लोगों के पास कोई स्टडी आवर का टाइम रहे तो उस टाइम आवर में भी लिख ले सकते हैं बेटा। बायोन फोर्स वगैरह मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ बेटा, इसका रिवीजन ऑलरेडी मैं बहुत बार कर चुका हूँ। बयानसी वगैरह का, आइसबर्ग्स वगैरह के फॉर्मलेस वगैरह सब कुछ कर चुका हूँ मैं वो बेसिकली। रिकॉर्डिंग भी है, एक बार को देख लीजिए आप लोग। 45 क्वेश्चंस का पेपर है बेटा। और कोई डाउट किसी को? सर पेपर का पीडीएफ सेंड करिए कल सीनियर एम्स को। वीडियोस में भेजता हूँ मैं आज आप लोग को एक बार। वो भी वीडियो लिंक भेज देता हूँ मैं आज। ठीक है, ओके चलिए, टेक केयर बेटा, बाय। रिवाइज करिए अच्छे से एक बार एंड ट्राई टू राइट द एग्जाम विद